Hey, assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. So here in this video we will talk about another international volunteers camp which is organized by ICYF in Antalya, Turkey. But before going into the details, those of you all who are new to my channel, please go and subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update. So coming back to the video, this program is organized by Islamic Cooperation Youth Forum and having its deadline by 1st of August 2022, but it says 31st of July as deadline in this poster. So you will make sure that you are done with your application by 31st of July. So it has designated separate days for men and young women. For men, it will take place from 19 to 23 of October, and for young women it will take place from 26th to 30th October. So because it is organized by Islamic Cooperation Youth Forum, so it has separate days for conducting this volunteer camp for men and women. So going into the details of this program, it is organized by ICYF International Young Volunteers Camp to equip volunteers with skills in responding to international disasters and humanitarian crises in partnership with Ministry of Youth and Sports of Republic of Turkey from 19th to 30th of October in Antalya, Turkey. So the people of all ages and cultures are welcomed through this program, and those of you all who are working hard to eradicate poverty and improving basic health and education services, as well as working for the climate change and its resolution and other environmental issues and disasters. So those people are welcomed through this program. Also, it aims to raise awareness regarding the humanitarian crisis in the OIC geography specifically, and empower the young volunteers in those areas to cater these issues, and also work on sustainable human development and promoting global peace. The specific objectives of this program includes to raise awareness of young volunteers on humanitarian crises and the natural disasters, to prepare these volunteers for emergencies and disasters, to develop the knowledge and skills of young volunteers to cater those issues and their resolution with different methods, to facilitate their engagement in global peace and sustainable human development through volunteerism, to enhance their capacities through interactive training and workshops, and to develop young volunteer skills in psychosocial support together with the experts during the recovery period of disasters. So talking about the location and date of this program will take place in Aladdin Kekabat Youth Camp, Kepez, Antalya, Turkey, and the dates I have already discussed before. So the eligibility and the participant selection will depend upon these factors, that either you are a citizen of an OIC member state or a representative of a Muslim community in a non-OIC member state. You can communicate in English very well, or having your age less than 35, and then you have previous experience in these work and have worked before in projects regarding these issues and targeting these global and regional issues, and working hard to provide to your local community, and passionate to attend the full camp training program. The deadline is 31st of July and 24 o'clock by Istanbul time. So आप लोग उसके मुताबिक अपनी application को fill up करेंगे. Then the announcement of selection will be conducted through emails. जो selected participants होंगे उनको emails आ जाएंगी. And talking about the cost, the international transportation for the participants, जो international participants होंगे उनकी visa cost वगैरह जो है वो ये program offer नहीं कर रहा. So ICYF is only working on the local transportation for the participants in Turkey. So जो वहाँ के residents हैं और जो यहाँ से जाने वाले हैं उनकी local transportation provide की जाएगी host ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बट वीज़ा के लिए सिर्फ वो इतना फैसिलिटेट करेंगे कि कोई आपके लिए जो है एक लेटर
जो है वो इनविटेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी वीज़ा में फैसिलिटेशन हो जाएगी. देन सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम. So we will click apply to this event and we will be having this interface in front of us. So यहाँ पे आप अपने आप को register कर सकते हैं and you will add all your credentials, your name and surname and your phone number, email, mobile, etc. and then you will log in through your account. So you have filled up all your credentials already. Then we will have this page in front of us. इसके अंदर आपसे nationality का proof मांगा जाएगा. So you will add your CNIC in this field. यहाँ पे आप अपना CNIC enter कर सकते हैं. Then you will add your passport और ID card. यहाँ ID card की option है, so आप ID card भी डाल सकते हैं. And then passport और ID card का number and your date of expiry. So आप यहाँ पे इस field में enter कर देंगे. ठीक है. Then you are having your where did you hear about this program. So यहाँ पे आप ICYF का social media account भी बता सकते हैं. Then आपको अगर LinkedIn से पता लगा है, so you can also add LinkedIn. ठीक है. और अगर आपको YouTube से पता लगा है, so आप YouTube को others में जाके YouTube के चैनल का लिंक भी दे सकते हैं. Then you are having this education और इसके अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे. Then your department and then your language level. So mostly मैंने already I have said it before कि B2 level जो है वो हमारे पास हम अचीव कर चुके होते हैं अपने बैचलर्स में मोस्टली लोग. So यहाँ पे आप B2 को क्लिक करेंगे और अदर लैंग्वेजेस में आप अपनी नेटिव लैंग्वेज डाल सकते हैं. ठीक है. उर्दू है, हम उर्दू पाकिस्तानी ज़्यादा बोलते हैं, so उर्दू we will add. Then we will add our social media accounts, so your Facebook profile link, your Twitter profile, your Instagram handle and then your LinkedIn profile. So यहाँ पे question है, are you volunteer at any organization? So आप name of organization लिखेंगे, then your position or role in the organization और upload organization website link. So यहाँ पे वो कर देंगे and then आपके पास emergency contact number की person की details हैं, वो आप एंटर करेंगे. उसके साथ रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ एंटर करेंगे. देन डू यू हैव एनी एलर्जीज़. सो आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई एलर्जी नहीं है, सो आप नो भी कर सकते हैं. मेडिकल हिस्ट्री में भी आप नो कर देंगे. देन टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन. सो प्लीज़ एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन वॉलंटियरिंग. सो मिनिमम 300 वर्ड्स हैं. सो आप इसके अंदर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एनलिस्ट कर सकते हैं अच्छे से. देन आप अपलोड कर सकते हैं अगर आपके एक्सपीरियंसेस के कुछ विजुअल्स आपके पास हैं, सो आप एक फ़ाइल मर्ज करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं. देन प्लीज़ एक्सप्लेन योर प्रोफेशनल मोटिवेशन फॉर अटेंडिंग द कैंप. सो ये भी मिनिमम 300 वर्ड्स की है और आप यहाँ पे मोटिवेशन लेटर एक छोटा सा करके लिख देंगे. ठीक है. ओके. Then some applicants have a background, identity, interest or talent in volunteer experience that is so meaningful that they believe their application would be incomplete without it. So आप minimum 300 words में कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस है जो आप समझते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर वैल्यू ऐड करेगा फर्दर, so आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं. Then have you ever faced any crisis during the volunteer experience? और आप उस क्राइसिस को कैसे ओवरकम किया था, तो आप यहाँ पे उसके बारे में भी लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन हाउ मेनी ICYF एक्टिविटीज़ हैव यू अटेंडेड. प्लीज़ राइट द प्रोग्राम्स नेम. सो अगर आपने ऑलरेडी ICYF का कोई एक्टिविटी अटेंड की है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे कॉस्ट का एरिया है जहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है. हम क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोग्राम इज़ पार्शली फंडेड, सो हम इंटरनेशनल वाले को क्लिक कर देंगे. ठीक है. लोकल ट्रांसपोर्टेशन वाले जो हैं वो मोस्टली टर्की के रेजिडेंट्स होंगे. देन हम लोग देखेंगे the next thing is I hereby declare that the information provided is correct. So यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे and then before ICYF International Young Volunteers Camp I confirm that I will have all the necessary tests done regarding the COVID-19 SOP. So यहाँ पे भी आप इसको चेक कर देंगे बॉक्स को. then
यहाँ पर आप लोग नेम लिखेंगे, एज अ पार्टिसिपेंट आई हैव रेड ऑल एंड एग्रीड, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफाइड बाय नेम और सर नेम, अपना नाम लिखेंगे एंड देन यू विल सबमिट दिस फॉर्म, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।